Hello guys, this is Srishti Agrawal and welcome back to my YouTube channel. This video is regarding the interview questions which Big 4 or Big 6 may ask you. I will be sharing with you the common interview questions as well as the interview questions for particularly the Stat Audit domain. So do watch the complete video. So the first questions which every firm asks you is introduce yourself. So I frame my answer like this, and you can also use this as a reference. A very good morning, sir. My name is Srishti Kumari, who was born and brought up in Lohardaga, which is a small town in Jharkhand, mainly famous for its bauxites. I did my schooling from XYZ school and secured 95% in class 10th and 12th exam. Then after, I decided to pursue my career in chartered accountancy and I cleared my CA foundation exam in December 2023 attempt with 346 marks out of 400. I recently cleared my CA intermediate exam in Jan 25 and secured an All India rank 37. Apart from my academics, I have keen interest in sports and I have secured multiple medals and certificates in athletics during my school days. I also love traveling and exploring new places. So you can introduce yourself like this. Also, the interviewer may add a word like together with your family background. Then you have to add something about your family. Like, I belong to a small family and my family consists of my mother, father, brother, or so you have to add the words accordingly as the interviewer frame his question. Now the next common question which an interviewer may ask you is, what are your strength and weakness? So for strength, you can frame your answer like this. Sir, my strength is that I don't give up very easily and I am open to learning. If a particular task is assigned to me, I would not give up until I get the answer. I am not hesitant to reach out to others, take their help to complete the task. So that is my strength. Now talking about my weakness, sir, coming from a small town, I did not had many opportunities to interact with people. So I face quite difficulty in interacting with new people in the first time. But as time passes by, I become comfortable with them and I believe that I will be able to overcome this weakness as soon as I enter the corporate world. So that is my weakness. आपको इस आंसर से ये समझ आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव एनी वीकनेस एंड आपको इंटरव्यूअर को भी ऐसा नहीं दिखाना कि यू डोंट हैव एनी वीकनेस बिकॉज एवरीबडी हैज़ सर्टेन वीकनेसेस. तो यू कैन टेल द ट्रुथ एंड बट आपको अपनी वीकनेस को ऐसा दिखाना है कि आप उसे ओवरकम कर सकते हो. दैट इज़ द की. नाउ द थर्ड कॉमन क्वेश्चन विच बिग 4 और बिग 6 मे आस्क यू इज़, व्हाई डिड यू चूज CA एज योर करियर? So you can frame your answer like this. Sir, I choose chartered accountancy as my career due to the professional respect which a chartered accountant gets, and I always desire for such respect in my life. The second thing is, coming from a not so stable financial background, I believe chartered accountancy was a good option for me due to its affordability. Also, I would be able to earn money during my study. So I thought chartered accountancy would be a good option for me. Also, there is a third reason. No artificial intelligence could ever replace the work of a chartered accountant because chartered accountants are required to exercise professional skepticism in their work, which no AI could ever do. So that was my reason for choosing CA as a career. Now the next question which firms may ask you is, why did you choose this domain? So I'm gonna explain the answer for why did you choose a Stat Audit as your domain, and you can frame your answer accordingly for different domains. So here is my sample answer. Sir, I choose Statutory Audit as my domain due to the exposure which it offers. It would provide me exposure into diverse fields, whether it be accountancy, business law, taxation and business management. Also, while I was in my CA inter and studying about audit, I was always curious to know that how this all would be applied in the practical life. So this curiosity drew me towards this domain. I want to know how the businesses operate in different industries. So I want to go for this domain. Now the next question which firms may ask you is, why firms should hire you rather than the other candidate?
In this answer you have to highlight your strength, but at the same time not defaming the other person. So here is my answer and you can use it as per your reference. So I believe that I would be a good fit for this role because I am disciplined and 100% committed to my work. I don't give up very easily, and whatever I do it with 100% perfection, which is quite evident from the fact that I have secured All India rank 37, which requires a lot of hard work and consistency. Now the next question which firms may ask you is, are you comfortable with long working hours? This question was asked to me in my interview as well. See, nobody is comfortable with long working hours, but you cannot say it out loud in interview. So you can use my answer as your reference to give the answer. Sir, during my CA inter journey, I used to study for 10 to 12 hours a day, which is required to clear an exam like CA inter. So I believe that working for long hours in articleship will not bother me since I am quite used to it. Now the next common question which firms may ask you is, how will you manage your studies and articleship together? For this question, here is my sample answer. Sir, I am quite aware of the fact that there will be long working hours in your firm, especially during audit season. But I also recognize that there will be period where the workload will be quite less. So I will be leveraging those off-season period for my studies to ensure that I am on track for my CA final preparation. The final common question which every firm asks is, do you have any question? Never ever say no to this question because it is the final question of interview which may give a favorable impression to the interviewer or the worst experience. So you can ask 2 questions for this. Yes sir, I do have a question. What are your expectations from me as a first year article? Now the second question which you can ask them is, what is one thing which you think that I should improve in my interview performance? If you ask this question, it will show that you are always open to feedback. So it may give a good impression to the interviewer. So these were all the common questions which firms may ask you. Let's move on to the questions which are asked by the interviewer for particularly statutory audit. फर्स्टली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग रट लेना अच्छे से, बिकॉज इंटरव्यूअर मे आस्क अबाउट व्हाट इज़ योर फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड वो आपको बोल सकते हैं कि आप मोनोलॉग उस पर बोलो. सो आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अच्छे से याद होना चाहिए कि आप उस पर एटलीस्ट 2 मिनट तो बोल पाओ विदाउट एनी स्टॉपेज. द सेकेंड क्वेश्चन इज assertions. सी इंटरव्यूअर्स का मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है टू आस्क अबाउट assertions, क्योंकि ऑडिट में आप वेरीफाई क्या करते हो, यू आर गोना चेक दी assertions, completeness, accuracy, cut off, valuation. So they can give you a hypothetical case like if all the purchases are properly recorded in the books or not. So in this case, which assertion are you testing? Here you are testing the completeness assertion. So they can give you a case and ask about which assertion are you testing. They can also ask you a question like, how are you gonna test the valuation assertion of fixed assets? तो जो चैप्टर 5 था ना ऑडिट बुक में CA इंटर के, आपको उससे वो पता होना चाहिए कि इस assertion मतलब आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस assertion को टेस्ट करने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करोगे. सो यू नीड टू रिमेंबर चैप्टर 5 बहुत अच्छे से. इंटरव्यूअर्स के फेवरेट AS है AS नंबर 2 इन्वेंट्री, फिर अर्निंग पर शेयर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लीज. आपको ये 4 AS अच्छे से करने हैं. एंड ऐसे के लिए आपको करना है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिट सैम्पलिंग एंड ऑडिट ओपिनियन, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन एंड व्हेन डू यू गिव इट. सो आपको ये सब अच्छे से करना है. द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट ऑफ डिटेल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. दे कैन आस्क यू लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन TOD एंड TOC. So you have to understand that TOD means test of detail and TOC means test of control. So remember the difference between the two. The next is what is professional skepticism. The next is for law से भी आपको ये पता होना चाहिए कि what is मतलब what are the threshold limits for CSR expenditure.
It is मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ऑडिट कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं एंड अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द ऑडिट कमिटी. नेक्स्ट इज फॉर टैक्सेशन, यू नीड टू नो अबाउट द इनकम टैक्स स्लैब्स एंड ब्रीफ आइडिया अबाउट LTCC STCG. मतलब आपको रिसेंट अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए, उतनी डीप नहीं बट लाइक अ ब्रीफ आइडिया. GST में आपको पता होना चाहिए कि how do you document GST in your books. What is CGST, SGST, IGST एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रेडिट के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि किस किस आइटम्स में क्रेडिट नहीं मिलता है. लाइक आपको ऑडिट तो पता होना चाहिए अच्छे से, बट आपको इनकम टैक्स, GST और लॉ का एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि जो ऑडिट में यूज़ आ सकते हैं, आपको वो पता होने चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, कारो रिपोर्टिंग. आपको कारो रिपोर्टिंग का एक एक क्लॉज आना चाहिए, बिकॉज वो किसी से भी पूछ सकते हैं. मैं कारो रिपोर्टिंग में ऐसा नहीं बोल सकती कि आप सिर्फ ये पर्टिकुलर क्लॉज को कर लो. तो आपको कारो रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए. मैंने जितने भी अपने कलीग से पूछा है, सबसे कारो रिपोर्टिंग का एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछते हैं इंटरव्यूअर. सो यू हैव टू रिमेंबर कारो रिपोर्टिंग. आपको ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड याद करना है, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि हाउ डू यू रिपोर्ट दिस कारो रिपोर्टिंग. एंड आपको अगर इंटरव्यूअर इन डेज से कोई क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन सिंपली से कि सर इट वॉज नॉट कवर्ड इन माई CA इंटर जर्नी, सो आई एम नॉट अवेयर. बट आपको एक इन डेज 109 है रेवेन्यू का, आपको उस इन डेज में आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि हाउ डू यू मतलब व्हेन डू यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू. तो आपको मतलब ये क्वेश्चन ना बहुत सारे इंटरव्यूअर्स रिपीटेडली पूछते हैं. तो आप सिर्फ ये इन डेज 109 का ये क्वेश्चन एक बार रिमेंबर कर लो, व्हेन डू यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू. बाकी आपको किसी भी इंडेस से अगर वो क्वेश्चन पूछता है, देन यू कैन सिंपली से कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. एंड लास्टली, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, देन आप वहाँ ब्लफ मत करना. आप सिंपली बोलना कि सर सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द आंसर बट आई कैन गिव इट अ ट्राई. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट द आंसर बट आई विल ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर. तो आपको वहाँ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है. अगर आपको आता है तो आप ट्राई करो, और नहीं आता है तो यू कैन सिंपली से नो. सो कॉन्फिडेंस इज़ व्हाट ऑल मैटर्स. आपको पूरी इंटरव्यू के टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है. द लास्ट थिंग इज़ कि एक्सेल शॉर्टकट्स लाइक इंटरव्यूअर पूछते नहीं है, बट अगर आप अपने रेज्यूम में मेंशन कर रहे हो कि यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ एक्सेल, देन दे कैन आस्क यू अबाउट VLOOKUP, हाउ टू ड्रॉ पिवट टेबल, सम इफ फंक्शन एंड शॉर्टकट्स. तो रेज्यूमे में सोच समझ कर इन्फॉर्मेशन लिखना कि इफ़ यू आर राइटिंग दैट आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एक्सेल, देन यू नीड टू नो ऑल दिस. बट अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि आपने सिर्फ ITOC ट्रेनिंग में सीखा है, देन यू कैन राइट दैट आई हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल. So I would attach the PDF which I referred to know about the interview questions which get asked in Statutory domain. You can check that out also. Thank you so much for watching this video. I hope that you liked it.